इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या होता है? दैट्स कॉल्ड पावर। So intensity can be written as power upon area, which is also equal to energy upon time into area. ठीक है? For a wave, intensity is always directly proportional to the amplitude square. ठीक है? So हर जगह पे जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है आर के साथ, उसका स्क्वायर रूट अगर कर लेते हैं तो दैट बिकम्स द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल वेव फ्रंट में इंटेंसिटी वेरीज एज 1/r स्क्वायर, देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज वेरिंग एज 1/r स्क्वायर रूट ऑफ। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में कराया था, उसी को रिकैप कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये अभी तक इतना ही फॉर्मूला हमने देखा था। प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होगा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि प्लेन लाइंस, प्लेन एनर्जी वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं, पैरेलल एनर्जी वेव्स, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद डिस्टेंस। r is actually distance from the source. Here r represents distance from the source. Is that okay? Yes, sir. Cylindrical में intensity is inversely proportional to radius and therefore amplitude is inversely proportional to root r. ठीक है, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने हाइजेंस वेव थ्योरी का बेसिक स्टडी किया था। इसमें आइडिया ऑफ वेवलेट्स के बारे में हम लोग को पता चला था। तो क्या हाँ सर, डन? हो गया सर। ओके। हाइजेंस वेव थ्योरी के अंदर में क्या है? देयर इज आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. So there is something called as wavelets, which is primarily being talked about. See, waves हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वेव होता है साउंड वेव टाइप का, which is referred as प्रेशर वेव। ठीक है, whereas दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल इंटरेक्शन से these type of waves are generated. ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ultraviolet, then you have infrared, then you have gamma rays, x-rays. They are electromagnetic waves. So electromagnetic waves का क्या होता है कि they do not require a medium to propagate. अगर मीडियम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात, वो दोनों ही कंडीशन में प्रोपोगेट कर सकते हैं। बट प्रेशर वेव ओनली propagate if there is a medium present, medium as in particles are present. ठीक है, अगर पार्टिकल्स एब्सेंट होंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोपोगेट। इज दैट ओके? Yes, sir. समझ गया। ओके।
अभी यहाँ पर वेव स्पीड का जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, दिस करस्पॉन्ड्स टू प्रेशर वेव्स जिसमें मीडियम की जरूरत होती है. इज दैट ओके? दिस डू नॉट करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये प्रेशर वेव के लिए होता है. इसमें तो यह नोट करना है सर, यही. नहीं, मैं सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ, इसको नोट नहीं करना. ठीक है. Huygens principle says that proposed geometrical construction to explain the propagation of wave fronts in medium and determine the position of wave front after any interval of time. This is known as Huygens principle and may be stated as follows. Every particle of the medium situated on the wave front. So if there is a wave front, suppose this is a wave front. So there are going to be multiple particles on to be present on it, right? And what it says is every point on the wavefront is going to behave as acts as a new source from which fresh wave originates, and these are called secondary wavelets. So every point or every particle on the wavefront acts as a source of secondary wavelets. Secondary wavelets क्या है? They are the basically सबसेट्स ऑफ वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट के पार्टिकल है, ये वेवलेट्स हैं. वेवलेट्स भी बड़ी होकर के फाइनली वो वेव फ्रंट बनेंगी. बट क्योंकि ये एक वेव फ्रंट का पार्ट है, ये यहां जनरेट हुआ, यहां पर जनरेट होगा साइमल्टेनियसली. आगे बढ़ेंगे तो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है. नेवरदलेस द आइडिया इज ये वेवलेट्स जो हैं दे आर गोइंग टू प्रोपोगेट, और प्रोपोगेशन के साथ साथ धीरे धीरे I mean they are going to have a smaller field. Smaller field मतलब उनका expansion कम होगा compared to the original wave front. However, in nature and characteristic, these secondary wavelets are almost like primary wave front from where they have actually originated. Wave front कहाँ से originate होगा? They are going to originate from a source which is actually emitter of one of the the radiations. ठीक है. Or waves. The secondary wavelet travel in a medium in all direction with the speed of original wave, that is light in the medium. So here again the idea is the secondary wavelets are going to travel at the same speed as primary wave front. The envelope of secondary wavelets in the forward direction at any instance gives the new wave front at that instant. So what is being said here is यहाँ से जो wavelet निकला, this is going to give us the idea of wave front at any time after this. So after this मतलब मान लो यहाँ पर हमारा वेव फ्रंट जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर. टाइम t इज इक्वल टू 5.1 सेकेंड पर वेव फ्रंट कहाँ रहेगा? तो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने वेवलेट जनरेट करी. 0.1 सेकेंड में इन सबका वेवलेट जो है, ये दो वेवलेट हमको पता चल रही हैं, इस तरीके से मूव ऑन कर रही हैं. ठीक है. मान लो पहले वाले वेवलेट का यहाँ तक पहुंचना हुआ है, दूसरे वाले का यहाँ तक हुआ है. अब इनको हम ये सेम फेज के पॉइंट्स हैं, अगर इनको मैं मिला देता हूं तो मेरा वेव फ्रंट जो है ना, it has propagated from here to this point. Are we getting this thing? That is what point number 3 means. The envelope of secondary wavelets in the forward direction at any instance give the new wave front at that instant. And we generally say that this wave front has actually propagated to this point. Making sense?
Let us illustrate the principle by considering the propagation of a spherical and a plane wave front. Let A be, which is over here, in 2A and 2B, be the section of wave front at any instant in homogeneous isotropic medium. Let V be the velocity of light in the medium. To find the position of wave front after an interval of time t, the following Huygens constructions is done. 1. A number of points A, B, C are taken on the wavefront AB. AB wavefront पर we have taken multiple points A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, G. So we have taken multiple ये points. Taking each point as a center, circle of radius Vt are drawn. Vt is V into time is going to be the radius of the circle. Secondary wavelet का idea क्या है? It is going to be generated. Every point is going to be the source of secondary wavelets, and secondary wavelets are going to travel in all directions. So मैंने भी जो बनाया था, if you remember, वो इसी तरह के circles type बनाए थे, जिसमें मैंने सिर्फ half circles दिखाए थे, but actually ये complete circles रहते हैं. तो जैसे ये point है, मैंने सिर्फ ये वाला part दिखाया था, इधर भी रहता है dotted form में. Are we getting this point? इसका ये है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आफ्टर टाइम टी मेरा क्या पोजीशन है वो पता चल रहा है. दैट इज व्हाट A dash B dash is the new position of the wave front. A tangent A dash B dash, which is common to all these circles in forward direction, is drawn. It is the section of envelope of secondary wavelets and give the position of new wave front after the interval t. After interval time t, that gives the position of new wave front. The direction in which disturbance propagate is called the ray. In a homogeneous isotropic medium, ray are always normal to the wave front. Now this is something which I have highlighted earlier as well. In a homogeneous isotropic medium, the rays are always normal to the wavefront. फिर नॉन होमोजीनियस में क्या होगा? नॉन होमोजीनियस में it is governed, the direction is going to get governed by something called as law of refraction. Are we getting this point? Homogeneous isotropic medium में क्या होगा? It is always going to be normal to the wavefront, whereas in heterogeneous medium, heterogeneous का मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहेगा मीडियम का. होमोजीनियस का मतलब हर जगह पर सेम कैरेक्टरिस्टिक रहेगा. सेम कैरेक्टरिस्टिक मतलब यू आर मूविंग इन अ सेम मीडियम, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो यू आर मूविंग इन फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. इज दैट ओके? इन हेटेरोजेनियस मीडियम the propagation of ray governed by principles of refraction. Of rays. ठीक है? Yes, sir. Huygens construction gives a backward wavefront also, which is contrary to the observation. This is because the intensity of secondary wavelets
varies continuously from maximum in forward direction to zero in backward direction. Forward direction में the intensity is maximum, whereas in backward direction the intensity is minimum or zero. Huygens principle can be used to explain the phenomena of reflection and refraction of light on the wave scale. तो अब आगे का टास्क जो है यहाँ से, that is going to be more of just theoretical part. Behavior of plane wave front in reflection and refraction. When plane wave fronts strike a reflecting or refracting surface, the emerging wave front may or may not be plane. Some situations are given. Incident wave front, if it is plane and the medium is plane reflecting surface, the nature of wave front after reflection or refraction is going to be plane. Wave front initial nature, it's plane. Medium is plane refracting surface. Nature of wave front after reflection slash reflection, it is going to be plane. Wave front plane है, medium is prism. Wave front जो final निकलेगा after reflection or refraction, it is again going to be plane. Incident wave front is plane, but medium is convex lens or concave lens. ठीक है? The wave fronts are now going to be spherical and converging in case of convex lens and diverging in case of concave lens. Plane, concave mirror, incident wavelength, wavefront is plane. Medium is concave mirror, and we are going to have spherically converging wavefront after reflection or refraction. Is that okay? Are we getting this point? Now this table is somewhat important to us. We can either note it down or, yeah, it's better to note it down. Hello. Kindly note this down. Note this down. Okay, sir. Let me know once done. Good. यस सर, हो गया तो नोट करके. मैं एनसीईआरटी वाला पार्ट ना तुम खुद से उसको रीड कर लो. उसमें कोई डाउट आता है तो लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन दैट. नोट कर लिया हम सबने? हाँ सर. ओके. एक्सप्लेनेशन ऑफ explanation of reflection of a plane wave at plane surface. Let S dash be the section of plane reflecting surface and AB that of a plane wave front. So this is AB. This is a plane wave front which has been traveling forward. And when it is at this position, this is actually striking the surface. Is that okay? Striking it at A, let V be the velocity of light, and at t seconds,
the time for the edge B of the wavefront to reach at surface A dash. B is the time when the ray B is reaching at A dash. The A segment has reached the surface of the plane mirror a bit earlier, striking it at A. After some time of that, the B portion is now hitting the point A dash, and from there it is getting reflected as B dash. And A has already got reflected and it is going along A dash. Are we getting this point? Yes, sir. Okay. According to Huygens principle, each point on the wavefront AB act as a source of secondary wavelet. In the presence of SS dash, as the wavefront advances, the points on SS dash successively struck by the wavefront becomes the source of secondary spherical wavelets. Thus, after a time t, when the wavefront strikes point A dash, the secondary wavelet from A has acquired a radius of AB dash. So it has already moved to this place and it has become something like this. Are we getting this point? नहीं, ये थोड़ा सा गंदा सर्कल बन गया मेरा. Yes, sir. Okay. So this is what he is talking about. इतने रेडियस का ये एक सेकेंडरी वेवलेट बन गया. टेकिंग ए एज सेंटर, यहां से जो वेवलेट जनरेट करते हैं वेवलेट वो अब इस रेडियस का हो गया. ठीक है. AB dash which is equal to BA dash which is again equal to VT. VT is the time difference between strike of this portion of ray at this point and this portion of ray. ठीक है. From here, I mean the time taken by this portion of ray to move from here to. Is that okay? Whereas secondary wavelet from A dash just starts. Let us draw a tangent A dash B dash from A dash to the secondary wavelet from A. Secondary wavelet from A is going to be this at point B dash. ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट A dash है. If A dash B dash is be a tangent common to all the secondary wavelets started from the different points between A and A dash. तो यहाँ पे जो स्ट्राइक किया वो उसका टेंजेंट यहाँ आया, जो यहाँ से यहाँ आया होगा, यहाँ से बढ़ेगा, उसका टेंजेंट यहाँ पर जाएगा. मे बी कलर चेंज करके उसका भी मैं बना देता हूँ. साइमल्टेनियसली रहेगा तो इट मे हेल्प अ बिट. और दिस इज समथिंग लाइक दिस और मे बी स्लाइटली स्मॉलर. ये बात समझ में आ रही है? दिस वन इज द सेंटर. Yes, sir. ठीक है. ये सेकेंड वाले वेव का सेंटर ये रहेगा और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रहा है और यहाँ पर A dash B dash को A dash B dash happens to be the common tangent of this as well. Is that okay? तीसरा point may happen to be this one. Let us say yeah, ये ले लेते हैं. ऐसे गया, स्ट्राइक किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया. इसके लिए जो हमारा सर्कल होगा that is going to look something like this.
और इसका tangent जो होगा वो भी a dash b dash ही है। ये सर्कल लग रहा है with this center somewhat। ठीक है, are we getting this point? So a dash b dash is the common tangent to all the wavelets which are getting generated when this wave front AB is striking on the plane mirror, and that point happened to be the source of a secondary wave. Now for these all secondary wavelets, A dash B dash is a common tangent. So can I say that wavefront AB has now moved become A dash B dash wavefront over here? यही definition था ना हमारे इसका। Secondary wavelet and secondary wavelet के through generated new position of the wavefront का। So AB wavefront has now migrated to A dash B dash. Okay. I hope it is clear to all of us. Yes, sir. Okay. Next thing is from triangle A dash. So there is this triangle A dash. Let me remove this entire thing. यहाँ पर we are talking about this triangle. We are talking about this triangle. Sin I, this is angle I. रिफ्लेक्शन के बाद अच्छा ये I है, ये वाला एंगल भी I है, दिस एंटायर एंगल। रिफ्लेक्शन के बाद जनरेट जो हुआ, दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस इज सेम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, कैसे आ रहा है ये? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से बेसिकली हम जनरेट फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश sin I is equal to perpendicular by base. What is going to be the perpendicular for this? Perpendicular by hypotenuse. So BA dash divided by AA dash is my sine of angle I. Similarly, from A, B dash, A dash, that is this triangle. Sine R is equal to AB dash divided by AA dash. AB dash, which is this side, divided by AA dash. अभी sin I by sin R क्या होगा? Sin I by sin R will become equal to A dash, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में रह जाएगा बी ए डैश, डिनोमिनेटर में रह जाएगा ए बी डैश। बी ए डैश बाई ए डैश divided by AB dash by A dash will become multiplied by A dash by AB dash. A dash will be gone. BA dash divided by AB dash is what? The sin I by sin R
ठीक है. Now from this BA dash and AB dash, BA dash and AB dash, these both are equal length and they are equal to VT. That is what we have proved already. ऊपर में just थोड़ी देर पहले यहाँ पर. Is that okay? And therefore VT by VT becomes equal to 1. That means sin I is equal to sin R, or angle I is equal to angle R. That is what the law of reflection says. Angle of incidence should be equal to angle of reflection. Isn't it? That's the very basic fundamental principle of reflection, or one of the laws of reflection. That is, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the second law of reflection. ठीक है. फर्स्ट लॉ क्या होता है? नॉर्मल incident ray and reflected ray all are going to lie in a same thing, isn't it? Yes, sir. उसको वेव फ्रंट एंड वेवलेट के प्रोसेस में the Huygens principle is able to explain the same thing, that is angle I is equal to angle R. ठीक है. Explanation for refraction of plane wave at plane surface, that is Snell's law. Snell's law में क्या होता है? sin I by sin R का रेशियो जो होना चाहिए, that should be constant. I is angle of incidence, R is angle of refraction. Is that okay? Okay, sir. कैसे कैसे प्रूव करते हैं? तो यहाँ पर एक वेव फ्रंट आ रहा है हमारा, ये भी वेव फ्रंट, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टाइम पर, मतलब at different time intervals. The points on wavefront AB, that is A, M, and B, are striking the surface of the two mediums. यहाँ पर after strike, they are getting bent by some angle. ठीक है. And after bending, they are again propagating in a similar manner. Is that okay? Next thing is, Okay, sir. let SS dash be the section of a plane reflecting surface separating medium 1 and medium 2, and AB that of the plane wavefront striking it at A. V1 and V2 be the velocity of light in the two media where V1 is greater than V2. Let T be the time for S B of the wavefront to reach A dash. T be the time for edge B of the wavefront to reach A dash, so that BA dash becomes equal to V1T. B से A dash आने में time taken is T, therefore BA dash should be equal to V1 into T. Next thing is, in the absence of SS dash, the wavefront AB would have advanced to the position A dash D. So if suppose the other medium would not have been present, तो क्या होता? ये वाला चलते हुए पैरेलली इस पोजीशन पर आता after time V1T. Is that okay? Where Yes, A sir. dash D is parallel to AB and AD is equal to BA dash.
is equal to V1. So this equal to this is equal to V1T. Uh, Similarly, okay, after time t, the secondary wavelet from A in medium 2 has acquired a radius of AB dash. ठीक है? This is AB dash. V2t is equal to V2 BA dash upon V1. Why is it become being read as so? V1t time t जो लगा, that is going to be BA dash by V1. Is that okay? यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा? The length of BA dash upon time t, sorry, upon V1. ठीक है? This is going to be equal to time t in which the wave front moves from V to A dash. ठीक है? Or the distance traveled by B segment after A has already collided. The time difference between the two events is going to be how much? It's going to be T, which is BA dash upon V1. ठीक है? Similarly, AB dash जो रहेगा, AB dash is nothing but same time में, ठीक है, T time में distance traveled by the wave in the second medium, which is going to be equal to A B dash. ठीक है, AB Sir, dash is nothing but V2T. हाँ बोलो बेटा. तो क्लास कितने बजे तक है? मेरे को 6 बजे तक जाने का है। 6:30, 6:15, 6:30 तक रहेगा बेटा. पर मेरे को 6 You can o'clock तक leave in निकलना। between. You can leave in between. ओके ठीक है. Okay. Now, अब ये नंबर्स तो ये वाला टाइम कितना लगा है इसमें? टाइम इज गोइंग टू बी BA dash by V1 which is equal to T. और यहाँ से उतने देर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया? तो AB dash will be equal to V2 into T, whereas T is nothing but V2 into BA dash upon V1. So it could be said that AB dash is equal to V2 by V1 into BA dash, V2 by V1 into BA dash. मीडियम 1 में जितना डिस्टेंस चला और मीडियम बी में जितना डिस्टेंस चला, मीडियम बी में जो डिस्टेंस चला दैट इज गोइंग टू बी मीडियम ए में जो डिस्टेंस चला मल्टीप्लाइड बाय V2 by V1. So now AB dash is equal to V2T and is equal to V2 into BA dash by V1, which becomes V2 by V1 into AD.
this AD, this AD is equal to BA dash. तो BA dash को AD से replace कर दिया हमने. Therefore, finally what happens is V2 upon V1 is equal to AB dash upon AD. AB dash upon AD is nothing but the refractive index of medium. That is equal to radius in medium 2 upon radius if medium 2 where. Let us draw a tangent A dash B dash from A dash to the secondary wavelet from A. If A dash B dash is a tangent common to all secondary started from different points between let us draw tangent A dash B dash from A dash to the secondary wavelet from A. If A dash B dash, A dash B dash, this particular thing is common tangent to all the wavelets generated by point of incidence on the surface SS dash or the plane mirror SS, sorry, the plane surface of interaction between medium 1 and medium 2. ठीक है, यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुए उनका टेंजेंट जो है दैट इज A dash B dash. A dash B dash is going to represent the refracted wavefront. Let M be any point on AB. Let us draw MPQ. We are drawing MPQ parallel to BA dash and PM dash perpendicular to A dash B dash. Parallel to AB. ठीक है, parallel to BA dash and PM dash perpendicular to AB dash. So we are drawing this PM dash which is parallel to BA dash. Now in similar triangle PA dash and M dash, PA dash M dash and triangle AA dash B, A dash and B. That is, these two are similar triangles. Quite clear, ये एंगल कॉमन है, ठीक है. और इसमें दूसरी चीज जो हमको करनी है, this line is parallel to this line, therefore this angle and this angle are equal, this angle and this angle are also going to be equal. Is that okay? So the two triangles are going to be similar, therefore PA dash by A dash, PA dash by AA dash should be equal to M dash A dash by B dash A dash. Is that okay? PA dash by AA dash is equal to
अच्छा, इसके साथ इक्वेट नहीं किया है, ये वाले के साथ इक्वेट किया है, इट्स इक्वली गुड. So they have taken the ratio of this, and here this and this. Is that okay? And in similar triangle PA dash Q, PA dash and Q. So we are talking about this triangle now. Great. This triangle and this triangle. ये दोनों triangle में PA dash by AA dash, PA dash by AA dash is PQ by AD, PQ by AD. तो अभी इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो PA dash by A dash is equal to PM dash by AB dash is equal to PQ by AD. Having said that, from 2 and 3 we get PM dash by AB dash is equal to PQ by AD, or PM dash by PQ, PM dash by PQ. So PM dash, which is this side, by PQ is equal to AB dash by AD. AB dash is this one and AD is this one. PM dash is this one, PQ is this one. Substituting A dash B dash, AB dash by AD from equation 1, which we have discovered over here, V2 by V1, what we get is PM dash by PQ, PM dash by PQ is equal to radius in medium 2 by radius in medium 2 if medium were absent. That means अगर इधर same medium 1 रहता तो the radius of wavelet would have been become PQ, and if it is present it is equal to PM dash. इन दोनों का रेशियो ये हो गया. Since PQ is the radius of wavelet from P, if medium 2 were absent, PM dash must be the radius of wavelet from P in the medium 2, as PM dash is drawn perpendicular to A dash B dash. The wavelet from P must touch A dash B dash. Since P is any point between A and A dash, A dash B dash is the common tangent to the wavelength from all points between A and A dash. Hence, A dash B is refracted wavefront. So how we are establishing this thing? वैसे ये arguments में establishment वगैरह करके पूछा नहीं जाता है. This is the most rejected thing. But this is just there for information and knowledge. So what is being said over here is two things. ये रे, ये वाला रे रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने की वजह से ये ए बी डैश जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डी ए डैश. ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये तीसरा रे हमने लिया था जो सेम टाइम फ्रेम में रिफ्रैक्शन के बाद यहां तक आ पाया है. इज दैट ओके? और सेकेंड मीडियम में आने के बाद ये जो है
these are the wavelets, or A dash B dash is common tangent to them. What does this mean? ये ओरिजिनल वेवफ्रंट था हमारा, और ये वाला क्या है, A dash B dash जो है, that is nothing but the refracted wavefront of the same wave, same original wavefront. ठीक है? Therefore, A dash B dash must be a refracted wave. Reduction of law, ये प्रूफ कर सकते हैं, sin I by sin R ऊपर हो गया था V2 by V1, इन सारे रेशियोज के बराबर है V2 by V1, and V2 by V1 is speed in medium 2 by speed in medium 1. ठीक है? And that ratio itself is refractive index. So deduction वाला part पे I'm not going much. V2T V1 V1 by V2 या V2 by V1, that is constant, and that is my refractive index 2. ये सारी चीजें हो जाती है हमारी, और वो सारी ये आ जाती है. Optical path is something which we are talking about. Now this is something which is important. Optical path, if a ray, light ray, और ये क्यों है important हमारे लिए, क्योंकि हम interference and diffraction वाले time पे, when we are going to do that part, this optical path is going to be of much importance. It is going to be very significant, so just listen it very carefully. If light ray travels a distance d in a medium whose refractive index with respect to air is n, then nd is called the optical path traveled by the light ray in vacuum or free space. Light ray is traveling distance d in a medium of refractive index n. So nd is said to be the optical path, or maybe path length. If v is the speed of light in a medium of refractive index n, then according to the wave theory we have v is equal to c by n. When c is the speed of light in air or vacuum, for traveling a distance d in this medium, the time taken by light is given by E is equal to d by v, or d by c by n, that is nd by c. The time taken is nd by c. In the same time t, the distance traveled by the light ray in air is going to be c into t. C into t is equal to, t is nothing but nd by c. Therefore, distance traveled in time t in the air or free space is going to be c into t, which is c into nd by c. Cc will get cancelled, it will become nd. Clearly, a light ray travels a distance d in a medium of refractive index n in the same time as it travels a distance nd in medium having, in free space or in air. Okay, and this distance is something which we are calling optical path. Okay, optical path. Effect of wavelength of light in going from one medium to other. एक medium से दूसरे medium में जाएंगे तो what effect we will see in the wavelength. So देखिए speed पर क्या effect पड़ता है, v is equal to c by n हो जाता है, right? Refractive index of the medium with respect to air or free space. लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या हो जाएगा इक्वेशन, लेट अस से फ्रीक्वेंसी इज न्यू फॉर द वेव एंड लैम्डा in the second medium
or in the medium in which velocity of light is v, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज लैम्डा डैश और इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज लैम्डा, तो न्यू लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू न्यू lambda by n, that implies lambda dash is equal to lambda by n. ठीक है, न्यू न्यू कैंसिल हो जाएगा। न्यू एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, स्टैटिक मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम अगर मूव कर रहा है तभी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर सोर्स मूव करे तो। The derivation is going to be when light is below. When the light ray passes from one medium to another, then its frequency V does not change. Is that okay? The frequency does not change with medium. As I said, it will change only in set. Frequency nu does not change, but its speed and hence its wavelength changes. न्यू किस कंडीशन में चेंज करेगा, या तो मीडियम मूव कर रहा हो या फिर सोर्स मूव कर रहा हो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, ठीक है, जब तक लाइट सॉरी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए ना, मीडियम की एक सब्सटेंशियल स्पीड ना हो जाए, द इफेक्ट्स आर रेयरली गोइंग टू बी। आगे चल के हम लोग इसमें डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, जब सोर्स या मीडियम मूव करेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ है। जब तक मीडियम या सोर्स का स्पीड जो है that doesn't go in the range of like maybe 100 times या 1/100 times और मे बी 1/1000 टाइम्स, इस रेंज में जब तक नहीं पहुंचता है ना, बहुत कम रहेगा। ट्रक की लाइट, ट्रक चल रहा है और ट्रक की लाइट चल रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और मान लो एक टॉर्च इलेक्ट्रॉन के ऊपर बांध दिया हमने और इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको दौड़ रहा है, उसकी स्पीड लगभग 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाती है, which is approximately 1/150 times the speed of light. वहां पर फ्रीक्वेंसी जो इमिट होएगा ना टॉर्च से, that will have or that will bear some impact. 1% 1.5% का चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में, उससे ज्यादा नहीं आएगा, और वहां पर कम से कम चेंज आएगा। बट ट्रक की लाइट अगर ट्रक चल रही है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, या इतना नेग्लिजिबल चेंज आएगा कि हम मेजर नहीं कर पाएंगे। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Okay. If speed of light in water be v and the wavelength be lambda w, then v is equal to speed of light in water is equal to nu into lambda w. In vacuum, the speed of light is c. If wavelength be lambda, then c is equal to nu lambda. Dividing both the equation, c by v is equal to lambda by lambda w. But c by v is equal to n, therefore it's going to be n is equal to lambda by lambda w, or lambda w is equal to lambda by n. मीडियम में जो मेरा वेवलेंथ होगा that will be equal to wavelength of the light in or the radiation in free space upon the refractive index of that medium, ठीक है। और स्पीड का कैसा होता है, सेम चीज होता है, स्पीड इन अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय refractive index of the medium. Is that okay?
And that is it. We have to solve examples. What is the shape of wavefront in each of the following cases? Light diverging from a point source. Point source से light निकलेगा तो कैसा wavefront होगा? Spherical. Light emerging out of a convex lens. Convex lens से अगर light निकलेगा, convex lens का काम क्या होता है? कोई भी light source आएगा तो after reflection अगर focus पर रखा हुआ है, it is going to move parallel, right? फोकस पर आपने रखा है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो यू विल हैव प्लेन वेव फ्रंट. Portion of wave front of a light from a distant star intercepted by earth. It is going to be sort of plane wave front. डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो इतना बड़ा सर्कल बन गया होगा उस स्टार से निकलने के बाद कि उस सर्कल का जो पोर्शन अर्थ इंटरसेप्ट करेगा, दैट पोर्शन इज ऑलमोस्ट गोइंग टू लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू प्रोपोगेट एज अ plane wave on the earth surface. Is that okay? Let us list some factors which could possibly influence the speed of wave propagation. Nature of source. Will it influence the wave speed of wave? No. ठीक है. दूसरा क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पर स्पीड डिपेंड करेगा? नो. मोशन ऑफ सोर्स एंड और ऑब्जर्वर, अगर स्पीड बहुत कम है तो नहीं करता है. ठीक है. और इनफैक्ट सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, दैट इज एब्सोल्यूट, वो चेंज ही नहीं होती है, रिलेटिविटी में भी चेंज नहीं होती है. हाँ, अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, ऑलमोस्ट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपके लिए टाइम जो है वो रुक जाएगा. टाइम फ्रेम जो है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, सॉरी, दैट इज गोइंग टू गेट इनलार्ज्ड अ लॉट. मतलब जैसे अर्थ पे हम 1 सेकेंड काउंट कर रहे हैं, अभी घड़ी का सुई घुमा 1 सेकेंड हो गया. अगर हम सेम घड़ी बांध करके या सेम वो क्लॉक काउंटर्स ले करके हम स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज की स्पीड पर चलने लगते हैं, मे बी 0.99 c. ठीक है. 0.99 c का मतलब क्या हुआ? c इज स्पीड ऑफ लाइट, उसका 99% स्पीड से हम चलने लगेंगे तो हमारा टाइम जो होगा 1 सेकेंड, ठीक है, अर्थ के क्लॉक पे जो नॉर्मल 1 सेकेंड है हमारा, वो 1 सेकेंड will become very large. Are we getting this point? That will be close to like 100 times. 10 टाइम्स से 100 टाइम्स तक वो हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड से 100 सेकेंड तक इनलार्ज हो जाएगा. यानी 1 सेकेंड का लाइफ स्पैन जो होगा दैट विल अपीयर एज 100 सेकेंड. उतना टाइम कवर करने के बाद फिर एक्चुअली हम वहां पे 1 सेकेंड कवर करें, तो टाइम इज गोइंग टू गेट डायलेटेड. ठीक है, लेंथ का इलोंगेशन हो जाता है, टाइम डायलेट कर जाता है अगर हम इस स्पीड पर चलने लगते हैं. बट एनीवे, यहाँ पर ये है कि स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट होता है. ठीक है. व्हाट इज गोइंग टू बी द, हाँ बोलो. I have a class right now, so can I leave? 6:15 में. हाँ ठीक है, चलेगा, यू कैन. बट ये एग्जांपल्स पढ़ लेना सारे. हाँ. ओके. Will wavelength have any influence on the speed of light, speed of wave propagation? No. Intensity of wave? No. That is why it is given that none of these factors are affecting the speed of light. Which of these factor, if any, does the speed of light in vacuum? Which of these factors, if any, does the speed of light in vacuum, speed of light in medium, say glass or water, depends? Hmm.
Speed of sound in medium is independent of nature. Array, it's not sound. Is independent of direction of propagation, independent of motion of source related to the medium, but depends on the motion of observer related to the medium. Depends on the wavelength. Is independent of the intensity. The speed of light in medium depends on its refractive index. Speed of light in the medium depends on its refractive index. यहाँ पे इन लोगों ने गलती से डाल दिया स्पीड ऑफ साउंड, इट शुड बी स्पीड ऑफ लाइट इन द medium. Reflection of light wave, a plane wavefront ABC is incidented on a plane reflector XY as shown in adjoining figure. Calculate how long will it take for the disturbance from C to reach E. C से E पर reach करने के लिए what is the time that will be taken? How long will it take? देखिए AC दिया हुआ है, AE है, अच्छा, given that AE is 10 centimeter, AD is AE is 10 centimeter, AD is 5 centimeter, and speed of light is, तो AE हमको दिया हुआ है, AE कितना है 10 सेंटीमीटर है, C कितना हो जाएगा, this is perpendicular by hypotenuse, perpendicular will be hypotenuse into sin 30 degree, that is 10 sin 30, sin 30 is 1 by 2, so it will be equal to 5 centimeter. Is that okay? टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, it will be 5/3 into 10 to the power 8, 5 into 10 to the power -2 भी रहेगा सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए, so it will be 1.67 into 10 to the power -10 seconds. इतने सेकंड्स लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ आने में. Is that okay? How much distance the wavelet emerging from A has traveled during this time? बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो फॉल किया और यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है, अभी गेटिंग दिस पॉइंट, ये यहाँ पे फॉल करके फिर रिफ्लेक्ट होएगा, तो ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, इट वुड हैव ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस चलेगा, जितना ये वाला डिस्टेंस होगा सी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सो ये भी 5 सेंटीमीटर चला होगा. बात समझ में आ रही है? इसको यहाँ पर जितना आने में टाइम लगेगा या जितना डिस्टेंस चलेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट उसी मीडियम में जा रही है यहाँ पे, तो उसके बाद जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होएगा तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा, स्पीड सेम मीडियम में चेंज नहीं होगी, तो ये यहाँ से ए पर स्ट्राइक करने के बाद it would have got reflected and it would have traveled a distance of 5 सेंटीमीटर. ठीक है. Where is the wavelet emerging from D at this instance? D वाला wavelet कहाँ रहेगा, तो ये वाला अगर 5 सेंटीमीटर चला है तो D वाला यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के it would have come to this extent 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. Why 2.5 सेंटीमीटर? इधर ये 5 आया,
ये 2.5 आगे आया और 2.5 पीछे जाएगा, आगे जाएगा। ये बात समझ में आ पा रही है? यस हाँ। सर। ओके। सर हाँ बोलिए। तो आप, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा तो मतलब आपने करा, तो ये कौन सी बुक है सर बोल रहे? एक बुक है आईएससी वालों के लिए, हाँ। आईएससी वालों के लिए, बट कौन सी बुक है उससे क्या फर्क पड़ता है, चीजें तो सेम ही नहीं वो पढ़नी है ना। एक्चुअली, हाँ मैंने पहले भी पढ़ा, बट वो 589 nanometer is incident from air on a water surface. Water wavelength, frequency, and speed of reflected light and refracted light. The refractive index of water is 1.3. Wavelength incident to a 589, frequency and speed क्या रहेगा of reflected light. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड तीनों सेम रहेगा, रिफ्लेक्टेड वाले के लिए कोई चेंज नहीं होगा, सेम मीडियम में जाएगा। रिफ्रैक्टेड वाले के लिए दे आर गोइंग टू चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, whereas speed and wavelength are going to decrease by 1.33 times. Is that okay? ओके सर। यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है हमारा, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, c by lambda is equal to nu, and c is nothing but 3 into 10 to the power 8 divided by 589 into nanometer, 10 to the power minus 9, ये ऊपर जाएगा, it will become 10 to the power 9, 589 इसको 3000 कर लेंगे, ठीक है, तो ये 10 to the power 14 हो जाएगा, और 589 600 ले सकते हैं इसको, 5 into 10 to the power 14 हो जाएगा। 3000 को 600, ये 11 कम है, 11 कम को अगर हम काउंट करते हैं तो 25, 90, इसको 50, 50 कम है 0.1, ये लगभग 5.08 रहना चाहिए, 5.09 है, ठीक है, चलेगा। 5.09 into 10 to the power 14 हर्ज रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, स्पीड 3 into 10 to the power 8, एंड वेवलेंथ तो जो है वही है ही रिफ्लेक्टेड करेगा। रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज, द स्पीड एंड द वेवलेंथ आर गोइंग टू डिक्रीज। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.33, 1.33 का मतलब 4/3 होता है, दैट मीन्स 9/8 हो जाएगा, विच इज 2.25 into 10 to the power 8 हो जाएगा स्पीड, और वेवलेंथ जो होगा 590 into 3/4 हो जाएगा, 150, 450, और कम कर दो, 441, 442, 444 हो जा रहा है, सो 444 नैनोमीटर्स हो जाएगा। तो वेवलेंथ एंड स्पीड आर गोइंग टू डिक्रीज फॉर refracted light, and rest are going to be the same, that is frequency will remain same. Refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, c by n होता है। If the speed of light in glass independent of the color of light, is the speed of light in glass is independent of color of light? No, it's not. Color जब change होगा तो refractive index change होगा, और refractive index change होगा तो कलर चेंज होना मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल चेंज। If not, which of the two colors, red and violet, travel slower in the glass prism?
किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वायलेट का कि रेड का? रेड और वायलेट में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? या ऐसे बोलो तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? वेवलेंथ रेड का ही ज्यादा होएगा। किसका? रेड का ज्यादा होएगा। और हाँ क्या होता है, कॉशीज फॉर्मूला बताया था मैंने, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट ए बी बाय लैम्डा स्क्वायर। यस तो सर। लैम्डा जितना बड़ा होगा म्यू उतना कम होगा, राइट ना? राइट। तो म्यू अगर कम होगा तो सी बाई म्यू या सी बाई एन होता है वी। जिसका म्यू कम उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा मीडियम में। यस सर। इनिशियली सबका स्पीड सेम रहेगा। मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड ज्यादा। तो रेड का स्पीड ज्यादा हो जाएगा और वायलेट का स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। अरे ये गलत लिखा हुआ। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट पूछा हुआ है क्या? नहीं, इट्स डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट। द वायलेट कलर ट्रेवल्स स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म, और ग्लास, एनी ग्लास में, किसी भी ग्लास में ट्रेवल स्लोअर। What do you know about the speed of red and blue light in vacuum? It's going to be same. In glass, the red light is going to be faster, the blue light is going to be slower. Is that okay? ओके सर। ठीक है। और वैल्यू दी हुई है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड, बट दैट्स नॉट मच रेलिवेंट फॉर अस। Next one, for the same angle of incidence and the angle of refraction in three different media A, B, C are 15 degree, 25 degree, 35 degree respectively. For the same angle of incidence, the angle of refraction is different. Find the medium having least speed of light. देखो, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा उसका साइन वैल्यू सबसे बड़ा होगा। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। यस। आई सबका सेम है, जिसका आर बड़ा होगा उसका साइन वैल्यू ऑफ आर विल बी लार्जर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। हाँ अब समझ में आ रही है? यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज गोइंग टू बी मोर। तो जिसका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी मिनिमम। Are you getting this point? यस सर। पक्के से? हाँ यस सर। ठीक है, गुड। इसके क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से जहां से भी अटेम्प्ट करना है कर लेना। सर ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दो ना बुक का। ये पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने व्हाट्सएप पे, हर टाइम भेजता तो हूँ। मेरा व्हाट्सएप क्रैश हुआ था ना, अच्छा ठीक है, चलेगा, मैं अभी उसके भेज बाद देता से मैं हाँ। हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। एक सेकेंड दो, मैं अभी भेज रहा हूँ।